So I am from Bihar. My father is in police, so I have been traveling a lot throughout my childhood. Never stayed at a place for more than 3 4 years. I've changed a lot of schools and have a lot of friends at different places. Made a lot of friends and then had to forget them all because at that time we don't have Facebook and all. तो काफी ऐसा बिहार में घूमते रहे हम लोग. So I have stayed. My village, like my hometown, is Chhapra. Saran के नाम से, if you will search, the district name is Saran. And then I have stayed at Gaya, I have stayed at Samastipur, I have stayed at Madhubani, I have stayed at Katihar, I have stayed at Darbhanga. These are the places that I have lived in Bihar. Then I've done my 10th and 12th from Bokaro. Was preparing for UPSC and all. Qualified mains, qualified advance, could not get so admission into IITs. Dropped a year, but then my mother got sick, could not prepare well, so I stayed in a for a year. I was in Darbhanga with the family in 13, so I took a drop that year. In this year, if you have, some of you have might have seen the picture, so it was a kind of big setback for me. इसलिए मैं इतना resilient हो गया हूँ बहुत, and I understand how life works, because this was the time when I distinctly remember कि I had just moved into class 12th and 12th का रिजल्ट आया था. तो जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करने वाले थे या जिनका स्कोर अच्छा हुआ था, द फैकल्टी आस्क्ड देम कि लेट्स हैव अ ग्रुप पिक्चर एंड ऑल. आई वाज आल्सो स्टैंडिंग लाइक साइड में, तो मैं ऐसा साइड में खड़ा था, तो टीचर कहते हैं कि अरे केशव आ जाओ, मतलब तुम्हारा तो होना ही है नेक्स्ट ईयर. मतलब he was more confident about me than I was. So that was kind of like, I have been a good student from very beginning. Kuch time, like very diverse educational background. For some years, I have read in Saraswati Shishu Mandir, so I know all about RSS and all what it's taught. I know the pattern. I remember the anthems and all as well. बिंद सेनापति था इन आरएसएस के स्कूल में. स्कूल कैप्टन को सेनापति बोलते हैं. I was सेनापति. Developed a lot of leadership skills there. I am thankful for the organization. बहुत मतलब फ्रंट पे आके लीड करने का जो एक वो होता है, तो यहाँ स्कूल में ही मिल गया. स्टार्टेड एंकरिंग बैक देन, सो इट्स गुड. वो कभी माइक फियर, स्टेज फियर बहुत हद तक खत्म हुआ यहाँ पे. अगेन व्हेन यू आर, स्पेशली अगर तुमको जानना ही है कि हु एम आई, तो आई रिमेम्बर वन मोर स्टोरी फ्रॉम माय लाइफ. आई वाज इन क्लास 7th, आई थिंक. हाँ, आई वाज इन क्लास 7th and I was a good speaker. So there was a competition in the district town hall on 1st of December. The topic was 1st or 2nd of December. That on the lives, the district was celebrating the Jayanti of Dr. Rajendra Prasad, the first president. So me, along with two or three of my juniors from class 6 and 5 or 6, 3 4 people were selected from the school, and we were supposed to give speech in the town hall. My teacher gave me a 1 or 2 page speech to memorize and deliver that. So I was just informed a day back कि कल जाके speech देना है.
ठीक है, दे देंगे, इसमें क्या है. So I tried to like rote learn that speech and I went to the town hall. Now this was my first big speech. For the first time I was seeing it there, like in the big hall there are thousands of people, and the very front row the district SP, DM, and MPs and MLAs are sitting there, and I was supposed to make the speech, and I was the leader of the pack. You can understand, like all were the juniors, and the responsibility to win the medal was on my soldiers. कि कुछ ना कुछ तो मतलब करेंगे, बाकी वो लोग तो like तुम आप बोल लेंगे तो हम लोग भी थोड़ा बोल लेंगे ऐसा. I went on the stage, and I distinctly remember that I was not able to complete the salutation. Salutation समझते हो ना? So where you say कि distinguished guests and जो भी होता है कि DM, SP, MP, MLA, जिसका भी आप पहले वो करते हैं. I was not able to complete the salutation only also. I was so hesitant. And there were hundreds of students have come from all over the town to perform, and they have already given such great speeches that I was completely uh, overwhelmed. मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था. लाइक आई हैव सीन स्टूडेंट्स लाइक वो पूरा ऐसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह हाथ उठा उठाकर स्पीच दे रहे थे, एंड आई वाज लाइक कि फर्स्ट की द क्वालिटी ऑफ स्पीच दैट आई हैव गॉट इज नॉट दैट गुड. मैं परफॉर्म कर भी दूंगा तो क्या वो क्या बोल रहे हैं और मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू. एंड so we have went there about at 9 a.m. early in the morning, and our turn to give the speech came around 2 or 3 p.m. So एक तो ऐसे ही ड्रेन हो चुका है, and you have heard so many speeches, and there are so many participants. When I was not able to complete my salutation, the anchor just told me कि don't waste our time, please go. प्लीज गो तो नहीं बोला होगा, जस्ट ही सेड कि मतलब समय खराब हो रहा है ऐसा कुछ. And without even completing my salutation, I had to leave the stage. And what the other two guys would have done, you can think like somehow they completed. I think one of them completed their speech. One of the other guy didn't even went to give the speech, and that was a big turning moment in my life. I took it really as a challenge that I have to be a good speaker. So the style that you see today, that I think a lot and then speak very slowly, it has cultivated because of that. It's somewhat the story is similar with Atal Bihari Vajpayee also. He also faced a similar situation, and I didn't know the story back then कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, but तब से ऐसा हो गया कि अब स्पीच याद करके नहीं देना है. कोई भी स्पीच देना है तो याद करके नहीं देना है. If you understand the topic, then speak. Otherwise, don't speak. So, so that happened in class 7. Then I somehow, and the funny part was that they gave some consolation prize also, even to the students who could not speak anything. And then that consolation prize was given to me in the school in front of all the audience as if I've done something great. So only me and my teachers were knowing कि हम क्या करके वहाँ आए हैं. लेकिन कॉलेज स्कूल में तो हमको स्टेज पे मिल गया अपना consolation prize. But it was a bad experience, but it taught me a lot. Like instead of being frightened of this stage, it made me much more uh,
विलिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। उसके बाद तो ऐसा हुआ कि लाइक मुझे कहीं भी माइक मिले तो मैं पकड़ के स्पीच देता हूँ, नहीं भी मौका, नहीं भी बोलना है तो मैं बोलूंगा कुछ। So that was one incident that I remember from my school days. Then I came to Bokaro, and then I was telling you about this story. Again, one major failure that I faced. So in class 12th, 11th, I was like doing good student. I managed to get 9.4 CGPA in class 10th at that time. Although in the last two, in my pre-board, I got 10 out of 10 in all subjects, but in January and February and March, when everybody were studying for exam, I was doing cricket commentary. So I'm a good I used to be a good commentator. So मैं 5-10 घंटे जाकर मैं बस कमेंट्री करता था क्रिकेट की। 2 महीने दिन रात कमेंट्री चलती थी, पढ़ाई सब फिर भी ठीक ठाक नंबर आ गया था। 12th में आई वाज नॉट श्योर टू गिव मैथ्स ऑन द फर्स्ट प्लेस। पता नहीं था कि मतलब मैथ लेंगे या क्या करेंगे। आई वाज थिंकिंग ऑफ टेकिंग कॉमर्स। नाउ व्हाई कॉमर्स? बिकॉज एट दैट टाइम 2010 की टॉपर, यूपीएससी की टॉपर कोई दिव्य दर्शनी या कोई ऐसी कोई लड़की थी। And I read her story in the newspaper. वो दैनिक जागरण में कोई जोश कॉलम आता था, उधर लिखा रहता था। I saw कि अच्छा, he has done commerce from Delhi University, and I thought कि this is the path that I will follow. I will do the commerce and I will become a civil servant. Now, civil servant services was something which was always there in mind because my family has some background and उस environment में रहा हूँ शुरू से with SP and DM और थोड़ा सा, तो that's limelight used to attract a lot initially कि नहीं ये कर सकते, ये करेंगे। And parents were also like कि हाँ ये करना चाहिए and all, but could not take commerce क्योंकि in Bihar if you're a good student you take science, that's like ठप्पा लग जाता है, there is no other option. Although now scenario is changing, but so I ended up taking maths. Did well, was doing good. So I remember that day when the teacher said कि तुम्हारा तो हो ही जाएगा, फोटो खिंचवाओ। तो ही फिल्म के आगे फोटो खिंचवा लो, तुम्हारा तो हो ही जाएगा। Could not qualified interview, qualified mains, but didn't take admission because I wanted to go to IIT, so ignored NITs at that time. Went for advance, could not get the rank, so कहीं के ना ही रहे, ना घर के ना घाट के, कहीं admission नहीं हुआ। Some of my friends went to Kota to prepare specifically for engineering and all. I could not go to Kota because my mother was sick and finances were not that good. So I stayed at Darbhanga. In Darbhanga, we have a science college. So I took admission in Darbhanga Science College because to stay at home and study was difficult. Darbhanga Science College में hostel था, which was very cheap. So at that time, my father was posted in Madhubani, which is about 30 kilometers away, 30-40 kilometers away from Madhubani. So I thought, okay, I will stay here and continue my preparation for UPSC. But this 1 year opened a lot of paths for me because I was good at public speaking. I got recognized very early. I became the team leader for NSS. I joined NSS. There's a lot of story about NSS, but some of you have seen my pictures with APJ Abdul Kalam probably. So I got the opportunity to host APJ Abdul Kalam, a very big event. I got the opportunity to host Pranab Mukherjee, the sitting prime minister at that time. बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे। इट वाज द टाइम व्हेन एवरी नाउ एंड देन योर नेम विल बी इन न्यूज़पेपर, वो वाला पीरियड रहा यहाँ पे। लर्नड अ लॉट अबाउट हाउ टू organize communities, how to do social work and all. So this was phase of this was in 20
12 and 13 वाला पीरियड आई टुक अ ड्रॉप देयर. दो ऑप्शन था मेरे पास. आई कुड हैव, सो दिस वाज अ पीरियड व्हिच वाज रियली लो इन माय लाइफ. रियली आई स्टिल रिमेंबर आई वाज सिटिंग एट द, आई वेंट टू द टेंपल एंड आई एम क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द गॉडेस कि क्या कर लिया मैंने और क्या होगा मेरा. और इस तरीके के रियली लो पॉइंट इन लाइफ. आई हैव नेवर फेल्ट सो लो, बिकॉज इवन यूपीएससी नहीं हुआ तो उतना लो नहीं फील हुआ. देयर वाज ऑलवेज लाइक आई विल फाइट बैक. बट वो 12th के बाद आप हाइप इतना बना लेते हो and you know your mistakes which you cannot uh, tell to the people. तो कई गलतियां की और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, बहुत बदमाशी भी की 11th 12th में. ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा सब चल रहा था. फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स गेट द एक्सपोजर ऑफ द लाइमलाइट, जैसे अभी तुम लोगों के साथ होता है. मोस्ट ऑफ यू हु हैव स्टेड एट योर होम, यू विल गो आउट फॉर प्रिपरेशन टू दिल्ली. तो पहली बार बहुत लोग घर से बाहर निकलते हैं. अरे इतना डेंजरस सिचुएशन होता है ना, जहाँ आपको पता नहीं. आई होप मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस. फर्स्ट टाइम यू गेट दिस फ्रीडम कि ओ अब मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ. एंड यू डू ऑल द मिस्टेक्स दैट यू कैन डू जस्ट टू प्रूव कि नाउ यू हैव द फ्रीडम. तो क्या वही सब बदमाशी नहीं हुआ, could have done better. तो बहुत एक लो फेज था. देन आई केम टू दरभंगा. इट वाज अ रियली लाइक डाउनग्रेडिंग. कहाँ आप आईआईटी सोच रहे हो, कहाँ आप, मतलब देयर वाज नो कंपटीशन देयर. मतलब यहाँ पे मैं ऐसा एक ऑड वन आउट स्टूडेंट था कि टीचर्स भी समझते थे कि ये मतलब गलती से इधर आ गया है. एंड आई वाज गिवन अ स्पेशल रूम इन द हॉस्टल कि ठीक है तुम प्रिपेयर करो एंड ऑल. तो बट उस लेट डाउन ने ना मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटीज दी, जो बहुत मुझे अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो मैंने किया. शायद आई, इफ आई वुड हैव बीन एन आईआईटी आई वुड नॉट हैव डन दैट. तो ठीक है, वो शायद मैंने तुम लोगों को एक कहानी सुनाई होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. आई हैव रियली सीन दैट थिंग इन माय लाइफ कि ठीक है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ. दरभंगा गया, बट देन आई रियलाइज वेरी क्विकली कि यहाँ कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं. क्या करेंगे. तो एंड पढ़ाई इसमें भी काफी ऐसा, आई अब इतना कुछ करते हुए कैन नॉट डू स्टडी. अलग ही एक डायरेक्शन मिल गया था. तो at this time I did a district survey for education ministry of Bihar. District survey हमने किया दरभंगा में पूरा. I led a team of 60-70 students and we surveyed six about more than 600 schools. We surveyed about कि how वहाँ पे कैसा government initiative चल रहा है. That was the time on first year student is sitting across the education secretary and deciding कि ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं. Give a lot of confidence in life कि अच्छा ये कर सकते हैं. तो फिर इन 13th I decided कि चलो फिर इंजीनियरिंग ही करना है, सब कोई कर रहे हैं तो करते हैं. तो ऐसा नहीं था कि ये बहुत बुरा जगह था. वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम द सेम कॉलेज, ही इज नाउ इन साउथ कोरिया. तो अच्छा है, वहां भी वेन्यूज थी ही अगर ठीक से किया जाता तो. बट वाज नॉट इंटरेस्टेड. आई वाज डूइंग फिजिक्स ऑनर्स बाय द वे. सो ज्योग्राफी में देखोगे यू विल लर्न अ लॉट ऑफ फिजिक्स दैट कम्स हैंडी. इंटरेस्टेड इन फिजिक्स ऑलवेज. तो फिर क्या हुआ, हाँ 13th में आ गया मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में. 13th to 17th आई डिड माई इंजीनियरिंग. अगेन वेरी स्ट्रेंज लाइफ. बीच में आई एम skipping a lot of things. I did a lot of badmasi, which I will tell you sometime else. तो 13th में आया, बहुत ही एक अलग टाइप का सोच. एंड फर्स्ट ईयर वेंट बाय लाइक डूइंग वट एवर ऑल द स्टूडेंट्स डू, कि हम भी कुछ हैं वो शो करने में ही पहला ईयर चला गया. पता नहीं क्या कर रहे हैं. ना यूपीएससी हैज डाइड डाउन कि अब क्या यूपीएससी करना है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है.
हाँ, बट आई वाज वर्किंग ऑन माय लैंग्वेज. अभी मैं लुक बैक करता हूँ तो आई वाज वर्किंग ऑन माय लैंग्वेज. आई वाज ट्राइंग टू लर्न फ्यू थिंग्स बैक देन आल्सो. जो भी एक्स्ट्रा सीख सकता था. वाज constantly reading newspapers. Even in Bokaro, when I went for 11th, 12th, everybody was subscribing everything else. I subscribed for Times of India. I was regularly reading Times of India. Even in school days, 6, 7, 8, 9, seeing newspaper padna was like one of the favorite pastimes. और वैसा एक environment भी मिल गया था तो मतलब लगातार न्यूज़पेपर पढ़ता रहा हूँ. 6, 7 से एडिटोरियल्स पढ़ना जितना भी समझ में आता था. सो 11 12th में भी टाइम्स ऑफ इंडिया कंटिन्यूड रहा. स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री इन क्लास 11 क्लास 12th ड्यूरिंग अन्ना हजारे मूवमेंट. देन व्हेन केम हियर, बस थोड़ा सा जस्ट टू गिव यू अ आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वाज. आई stayed at my hostel, college hostel, for about 6 months and didn't pay the fee. I stayed there for free and ate the free food of the college and make everyone make a fool out of everyone. Continued living there. Not very proud of that, but yes, that kind of person I was like, ठीक है. Transformation came in the second year or after second year. I again a realization came कि मतलब क्या कर रहा हूँ, यही करने आया था क्या? What's the purpose of life? The big moment कभी और डिटेल से बात करेंगे. But then everything changed. The look that you see today, this is now permanent look for from the second semester. तब खुद से एक बार सेव किया, तब से अभी तक सेव्ड ही है हेड. Started youth service society here to do some social work. Started my own school in slum areas. Started UPC preparation here, like for seriously कि क्या है, कैसे करना है. Started looking for online materials and all. First year, second year, sorry, so first year तो खत्म हो गया था. Second year, third year में क्या थोड़ा और preparation. Then I came into the contact with नितिन सिंघानिया sir, आकांक्षा भास्कर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे थे, सौमित्र मोहन सर. बहुत लोगों से कांटेक्ट में आया बिकॉज ऑफ द एनजीओ वर्क एंड ऑल. एंड समहाउ दे टुक अ लाइकनिंग ऑफ मी. नितिन सिंघानिया सर से तो काफी अच्छी दोस्ती हो, मतलब दोस्ती क्या, मतलब जान पहचान हो गया. एंड आई स्टेड एट हर हिज हाउस, प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग. काफी गाइड किया सर लोगों ने. एंड गॉट अ कॉन्फिडेंस कि बच्चा ये मतलब आईएएस करने वाले को ऐसे भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, कोई बहुत अलग टाइप के आदमी नहीं है. तो ठीक है. फोर्थ ईयर में फिर आई गिव माय एग्जाम. आफ्टर दैट क्वालिफाइड देयर. बहुत ही एक वो था कि आप आसमान पे चढ़ गए. आई रिमेम्बर कि मतलब पापा के भी ऑफिस में जा रहा हूँ तो लोग ऐसे चेयर से उठ के चेयर दे रहे हैं कि अरे भाई कभी भी आईएएस बन सकता है, तो थोड़ा रिस्पेक्ट दो. सो आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ सक्सेस एज वेल लाइफ में. कॉलेज के टाइम में इन 4 ईयर ऐसे बीते हैं कि इवन इफ आई कॉल सम ऑफ माय सीनियर्स टुडे, तुम लोग सब कॉलेज में हो, तुम लोगों को पता है कॉलेज लाइफ कैसा होता है. बट माय सीनियर्स कॉल मी केशव जी. केशव नहीं कहते हैं, बहुत कम लोग केशव कहते हैं. तो यू कैन थिंक ऑफ की द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई अर्न देयर. हमारे फेयरवेल हो रहा था. फेयरवेल नहीं हो रहा था, सॉरी. हमने टेक फेस्ट कराया था एंड दैट वाज लाइक एंडिंग सेरेमनी ऑफ द टेक फेस्ट. एंड एवरीबॉडी वाज कांग्रेचुलेटिंग कि हाँ इन्होंने ये किया वो किया. So one of my seniors came to the stage and he said कि like केशव जी ने ऐसा किया. So the teacher who was coordinating all this, वो फिर जब उनका मौका आया स्टेज पे आने का, then like why everybody calls him केशव जी.
and I was in third year back then. So like, and nobody has the answer कि why everybody call केशव जी. And after that the teacher, वो मेरे बाद में fourth year में he became my project in charge as well. He started calling me केशव जी. तो बहुत सक्सेस देखा लाइफ में, मतलब कहाँ से उठ के कहाँ आना, और वेर यू फील लाइक यू आर समथिंग डिफरेंट, एंड द रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस दैट यू गेट. गांधी जी टाइप केशव जी हो गए थे. एंड देन आफ्टर व्हेन आई कुड नॉट क्लियर द फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम थोड़ा सा यूफोरिया था कि ठीक है तो पहली बार था, हो जाएगा. कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स इन 2018. उसकी तो बहुत अलग कहानी है. ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन नहीं था या नहीं होता, बहुत गलती की मैंने. सम कंप्लीट अनलकी थिंग्स, दिमाग में कुछ ऐसा ही चलता रहता है, तो डू सम मिस्टेक्स. तो 18 में प्रीलिम्स नहीं हुआ, एंड देन स्टार्टेड द डाउनफॉल. और 19 में तो मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब कहाँ हैं, क्या करेंगे. एकदम से होता है ना कि यू आर सडनली एट द पीक ऑफ योर लाइफ एंड देन यू आर एट द बॉटम ऑफ द लाइफ. Then I started like thinking कि क्या करना है, कैसे करना है. Again went back. Luckily I have read enough and बहुत soul searching की है, खुद पे बहुत काम किया है. तो it was, I would not say कि it was a easy phase of life, and that's why if I can relate to you guys, क्योंकि मैंने देखा है वो situation कि क्या होता है जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं. तो फिर pulled myself out, and I have been rebellious a lot. तो घर पे कुछ भी हुआ तो ठीक है, माई बैग इज पैक्ड, एंड एक झोला उठा के कहीं भी निकल लिए. तो kept roaming here and there, went to Bangalore, was offered some job because of the interview, did some UPSC का इधर उधर का काम, and then joined, which after lockdown went back, came back to my home in 2021, joined Vision. uh, and side by side started these classes as well. बस यही चल रहा है अभी तो. पूरा कहानी सुना देना तुम लोगों को. फिर भी बहुत कुछ है फैसिनेटिंग, फिर काफी डिटेल से. Padmini is saying, but you look smart in long hairs. Yes, I know that I look good in long hairs. And the reason behind cutting the hairs was this one single thing, that I don't want people to judge me based upon my face value. वो जो लोग जी बोलना शुरू कर दिया ना, वो इसलिए नहीं किए कि मैं बहुत अच्छा दिखता था या मेरे पास बहुत पैसा था. बिकॉज आई रियली वर्कड अपॉन दिस कि अगर कोई मुझे रिस्पेक्ट करता है तो वो इसलिए करे कि बिकॉज व्हाट आई एम, बिकॉज आई व्हाट आई नो, मैं क्या हूँ, इसके लिए कोई रिस्पेक्ट करता है तो वो डीप इनसाइड से आता है. और दैट विल नॉट चेंज. मेरा चेहरा कभी भी खराब हो सकता है, मैं कल बूढ़ा हो जाऊंगा, बाल पक जाएंगे, बट इफ somebody respects me, and it's really difficult to gain the respect when you are not looking good. जब तुम्हारे पास पैसा है ना, when you are, तुम आईफोन लेकर आ रहे हो और लैम्बोर्गिनी से निकल रहे हो, तो सामने वाला ऐसे भी तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा. ही विल नॉट इवन आस्क कि भाई आप में क्या क्वालिटी है. बट इफ यू विल सी सम ऑफ माय पिक्चर्स फ्रॉम माय स्कूल डेज, और सॉरी फ्रॉम माय कॉलेज डेज, आई डिलिबरेटली यूज्ड टू लिव लाइक कि मतलब इतना गंदा दिखूं कि पहले तो कोई बात ही ना करना चाहिए कि कौन आ गया है.
when you do that you have to put a lot of effort to gain the recognition कि नहीं भाई मैं भी कुछ हूँ, and then you truly polish yourself. चेहरे पे पॉलिश लगा के कोई तुमको पहचान लिया तो फिर तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज दैट विल फेड वन डे. तो हमने मैंने वही किया लाइफ में कि मतलब ऐसा पर्सनालिटी होना चाहिए कि मेरे पास कल 1 रुपए भी नहीं हो, मेरे पास कल कुछ, मैं कैसा भी दिखता हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं मुंह खोलूं तो एक रिस्पेक्ट लोगों में आए कि दिस गाय नो समथिंग, इसके पास कुछ है शेयर करने के लिए, एंड आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टू द लार्जर सोसाइटी. और बस वही एक रीजन था सेव करने का. उसके बाद तो फिर आदत हो गया कि ठीक है, अब अच्छा लगे या बुरा लगे अब तो ऐसे ही रहना है. तो इन सेकेंड ईयर आई डोनेटेड एवरीथिंग दैट आई हैड, all the clothes I don't know, all the good clothes, like जितना मुफ्ती किलर रैंगलर था सब डोनेट कर दिया. आई केप्ट 2 फॉर्मल शर्ट्स वेरी लूज, कभी फोटो पिक्चर्स दिखाऊंगा तुम लोगों को. तब वहां से रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है. सन्यासी बनने के सन्यासी बनने के प्लान में थे. मैं सन्यासी नहीं हूँ क्या, आई एम स्टिल अ सन्यासी, बट हिमालय में नहीं हूँ, या भगवा नहीं पहनता हूँ योगी जी की तरह. तो बस यही है. इफ एनीथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम माई लाइफ इज कि लर्न स्किल्स, improve yourself, and value your time. Sir, you attended enlightenment. पता नहीं enlightenment तो नहीं कहूँगा, because पता नहीं है कि how what it is. तो if anybody anything you can learn is we will work upon your skills and never oh, feel low or never ever get discouraged, क्योंकि लाइफ में rise and fall बहुत कॉमन है. आज कुछ है कल कुछ नहीं रहेगा, और फिर परसों कुछ भी आ सकता है. लाइक अ ईयर बैक आई वाज लुकिंग एट कि पता नहीं क्या होगा, करियर कैसे क्या करेंगे, और आज बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. आई वाज नॉट थिंकिंग कि इतना कुछ हो भी सकता है. तो ऑल अ जर्नी, कभी ऐसा छोड़ना नहीं है. इफ यू हैव गेन दैट knowledge, gain that potential, work upon your communication skills. If anything you can develop is your soft skills. Work upon your communication skills. No matter what, in what field you will go, you will learn that. Work upon your emotional intelligence. Try to understand people. So I got many messages from some of you are teachers, and there are many of my students who are teacher and who are juggling with online classes and all. और उनकी सबसे बड़ी वो हमेशा दे आर सरप्राइज कि सर हाउ यू मैनेज सच बिग क्लासेस विद 100 स्टूडेंट्स और 200 स्टूडेंट्स, एंड हाउ एवरीबॉडी स्टिल फील कि ऑल ऑफ दे आर इन लाइक एवरीबॉडी इज इन द क्लास, कैसे यूनाइटेड फील करते हैं. तो थोड़ा सा एम्पैथी हेल्प व्हेन यू अंडरस्टैंड पीपल, व्हेन यू नो द पेन. तो काम करो. अल्टीमेटली तो क्या है लाइफ में, कुछ लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे. चलो, it has been a long monologue. क्लासरूम कैमरा.
बताओ कुछ और करना है ना? We will take break today. Now I don't think I can teach anything else to you. It's quite a heavy lesson मेरे लिए भी. So going back to that rabbit hole. Anything you want me to discuss? Or yes, and I have been in relationship. If you are thinking about that, and I will advise you to not to do that. And will you attempt UPSC? Not very sure. Like the more I'm teaching, the more I'm feeling like कि नहीं attempt करेंगे. When I started, I thought कि एक साल पढ़ाएंगे फिर attempt करेंगे. And more I'm going into this, it feels more satisfactory, both like हर dimension से, spiritually, financially, सब तरीके से it's more rewarding. तो देखते हैं. I have never been someone who has looked for security in life. मतलब अभी नौकरी करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सरकारी नौकरी करने का सबसे बड़ा रीजन है लड़कों के लिए कि भाई शादी हो जानी चाहिए. बिना सरकारी नौकरी के आजकल शादी बिहार झारखंड में यूपी में तो मुश्किल हो गया है. And since I'm not planning to get married, तो मेरे लिए वो प्रेशर है नहीं. So I don't seek security in my life. जो है मेरे पास अभी बहुत है, कल कुछ नहीं भी रहेगा तो I will be equally happy. So ठीक है. If some of you will become IAS, then वो मेरे लिए और ज्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा. आई विल आई कैन सी कि बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है. और वाई जस्ट आईएएस? कहीं भी रहोगे किसी फील्ड में तो आई थिंक हम लोग एक ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. देखते हैं. सो नॉट डिसाइडेड यूपीएससी अटेम्प्ट करना है कि नहीं. Jaya is saying, sir, your life journey till now makes us realize that life is totally different from what we want it to be, but we need to be rebellious and hardworking like you. If there is no substitute to hard work, कभी भी लाइफ में उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि तुम चाहो कि कुछ तुमको बहुत आसानी से मिल जाए तो नहीं हो सकता है. थोड़ा सा रिबेलियस होना चाहिए. लव लाइफ आपका. We'll talk about that. I was not always a monk, so but you all can learn the lesson. Ki, at least while you are preparing, get try to keep yourself away from such distractions. Okay, let's end it here. We will meet again for geography. If you have some of your friends to whom you can recommend to join the NCRT batch, so you can recommend them. In one of the batches, Jayesh, you want to say anything?
सर एक क्वेश्चन था बहुत, मतलब मैं जब क्लास 6 में था उस समय ये क्वेश्चन मेरा मैं अराइव किया था, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है सर। जब वर्ना सिस्टम हम लोग का जब शुरू हुआ था, तो जब हम लोग 4 कैटेगरी में कास्ट को डिवाइड किए थे सर, कास्ट के अंदर भी तो बहुत सारा डिवाइड होता है, वो कैसे हुआ? जैसे मान चलिए गोत्र तो समझ में आया, लेकिन अगर मान चलिए जैसे अगर क्षत्रिय है हिस्ट्री उसके में अंदर पढ़ेंगे। चौहान, राठौड़, हिस्ट्री वो सब कैसे आया? हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और ज्यादा पढ़ना है तो सोशियोलॉजी ले लो। सोशियोलॉजी में बहुत डिटेल से हम पढ़ते हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। और हाँ, 8th बैच का क्लास खत्म फैज, वी विल नॉट मीटिंग एट 3 PM। रहने दो। यू ट्राई टू रीड, आई होप कि हमने बहुत तीनों ही टॉपिक हमने अच्छे से कवर किया है। तो ट्राई टू रीड, और हाईलाइटेड है जो इम्पोर्टेंट लाइंस है वह हाईलाइटेड इन रेड, जो थोड़ा कम है दैट्स इन येलो। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, या फिर पीछे का रिकॉर्डिंग्स देख लेना अगर बहुत प्रॉब्लम हो तो। और नहीं तो कम टू द नेक्स्ट क्लासेस, जब भी पॉलिटी शुरू होगा तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन, यू कैन ज्वाइन देयर। प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बट हो तो आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन आस्क। हाँ, पद्मिनी मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों को मैंने शेयर कर भी दिया है, मुझे एक बार पिंग कर देना, मैं तुमको पर्सनली भेज दूंगा। चलो ठीक है, करो प्रिपेयर। पॉलिटिकल थ्योरी का लिंक भी भेज देता हूँ मैं अलग से, उसके पॉलिटिकल थ्योरी की सारी क्लासेस वो करके मैं कर देता हूँ। बाय एवरीवन, सी यू in the next class on next Saturday. हाँ संजना। Sir, हम्म। sir, regarding CSAT, tell me something, sir. But we said there is a video that I have shared in the group. I think all of you have that access to that, about the reading comprehension. उसका एक वीडियो होगा ग्रुप में, कहीं नहीं मिले तो यू पिंग मी वंस, इट्स अ वेरी गुड वीडियो। उससे ज़्यादा और क्लैरिटी तुमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं मिलेगी, यू विल नॉट गेट एनीवेयर, सो डू दैट। एंड अबाउट मैथ्स, we have discussed about this in the personal mentorship batch or during those classes as well. It depends. There are some of you who have good understanding of maths till class 10th or 11th, 12th. Some of you have been very weak in maths during the school days and you are weak even today. So those who were weak in school days and have forgotten like basic rules, unitary method क्या है, percentages क्या होते हैं, then you start watching basic, some of a student was suggesting that there is something called magnet brains, which teach to students of class 6, 7, 8, 9, 10, like that. So you can watch their videos and learn basic mathematics first. Those who have certain amount of understanding, जिनको ये basic चीजें पता है, they can start with previous year questions. Take some topics like नंबर सिस्टम उठाओ, उसको सॉल्व करना शुरू करो। यू कैन टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोस एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यही मेथड है, एक एक टॉपिक करके। ये वाला वीडियो देखो, इन दैट वी हैव डिस्कस्ड मोर अबाउट मैथ्स एंड ऑल एज वेल। ठीक है, Okay, sir, thank you. चलो बाय एवरीवन, एंडिंग दिस। हाँ।